The topic we are going to discuss about is solids, and the subtopic is molecular solids. So what are molecular solids? These are those substances in which the particles forming the crystals are polar or non-polar molecules or atoms of the substance. Examples are in solidified noble gases, there are non-polar atoms. So आयोडीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, they all are molecular solids क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं. यहाँ पे कोई आयंस नहीं होते, या तो आपके पास एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड्स भी डिस्कस कि उनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. लेट्स सी के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है. दे हैव डायपोल इंटरैक्शंस और वैन डर वाल्स फोर्सेस. These forces are much weaker than the forces attraction between cations and anions. In ionic crystals या फिर covalent solids में they have the intermolecular forces. जबकि ये जो ionic forces हैं, ये covalent forces हैं, they are the intramolecular forces. So in the definition we started कि या तो आपके पास polar molecules होंगे या non-polar molecules होंगे. So polar molecules में we have ice and sugar. And in non-polar molecules, we have iodine, sulfur, carbon dioxide, and H2. Next, what about the melting and boiling points? Ionic solids में तो हमने कहा कि they have definite melting and boiling points, but polar molecule solids जो हैं उनमें higher melting points होंगे कि they have polar, उनमें dipole-dipole interactions होंगे, जबकि non-polar molecules जो होंगे उनके melting और boiling points comparatively कम होंगे as compared to those of polar. Let's discuss a question. Iodine is a molecular solid because the forces between its molecules are ionic, metallic, covalent, या van der Waals forces. So the option is van der Waals forces. क्योंकि ये एक molecular solid है, molecular solid में दो ही types की forces होती हैं, dipole होती है या van der Waals. क्योंकि ये एक हमारे पास non polar है, तो इसमें van der Waals forces होंगी. So this was all about the molecular solids. I hope you have understood it well, and thank you so much.